हेलो गाइस, नवनीत हियर बैक विद अनदर फ्रेग्रेंस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्रेग्रेंस की। दिस कम्स फ्रॉम द ब्रांड विलन एंड आई थिंक दैट दिस इज़ वन मच एंटिसिपेटेड फ्रेग्रेंस। एंड विलन के परफ्यूम्स जो होते हैं वो भले ही ज़्यादा पोटेंट ना हो, भले ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बट बिकते बहुत तेज़ी से हैं। एंड मे बी बिकॉज विलन हैज़ दैट होल्ड इन द इंडियन मार्केट अमंग इंडियन टीनेजर्स कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है विलन के फ्रेग्रेंसेस। एंड फॉर मी पर्सनली वन गुड फ्रेग्रेंस विच आई थॉट विलन मेड वॉज विलन हाइड्रा। उसके अलावा मुझे बाकी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है। स्नेक वॉज लिटरली वन ऑफ द फ्रेग्रेंसेस विच स्मेल्स लाइक रूम फ्रेशनर। सो रूम फ्रेशनर के तौर पर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो फ्रेग्रेंसेस ठीक है, बट स्टिल दिस टाइम वॉट विलन हैज़ डन इज दे हैव बॉट अ मोर सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस. I can say this fragrance is good compared to the other fragrances, not the best in the market right now, but still you can go for this fragrance. Before we dive into this video, guys, if you like this channel and if you think that we are making some good content, then please do share it with your friends. Share as much as possible because your share means a lot to me. Starting with the review. So Villian का जो bottling है, the packaging was not very impressive, but still it was huge. So huge packaging. जो box है इस fragrance का वो तो almost damage हो ही गया था because I think that this is not on the manufacturer's part but on the distributor part. Distributor बहुत ख़राब handle करते हैं box को, and because of that I think that the box has lost its intactness. But still I think that foam hold के वजह से ही ये perfume बच गया because बहुत बार ये throw कर देते हैं perfume को. Also they gave me a small tester, so I gave that tester away. And box wise I think that the box is good. Not the best box, but still quality improve हो सकती थी. This fragrance is made in India, as Villian के सारे fragrances are made in India. And let's read what Revolver has to say. Revolver says that be the most wanted man with Villian Revolver, India's first revolver shaped perfume. So yes, this is the revolver shaped perfume. मार्केटिंग वाइज मुझे लगता है बहुत अच्छी मार्केटिंग है एंड दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी इज दैट दे आर ट्राइंग टू गिव यू समथिंग यूनिक बिकॉज like typical fragrances, even if we talk about some expensive fragrances, let's say we talk about Versace Perfume, उनके बॉक्सिंग या उनकी बॉटलिंग भी वैसी नहीं होती जैसे विलन ने आपको बॉटल दिया है. प्लस आई थिंक दैट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट ट्रैवल सेफ बिकॉज अगर आप इसे कैरी करोगे मे बी पीपल माइट थिंक दैट यू आर कैरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट. लेट्स नॉट गेट इन टू दैट टॉपिक. लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिव्यू. सो रिव्यू वाइज द कैप and the bottle, it's all good. I like the cap. It's plastic, it's not that heavy, but still if it fits properly and if it does not drop, what's the problem? Let's talk about the juice inside this fragrance. So the juice inside this fragrance is good, fresh juice, but not that typical fresh juice which you can expect from fragrances like Versace Perfume, like Nautica Voyage, like Dolce & Gabbana Light Blue Intense. This is actually a clone, you can say, or an alternative of a very famous perfume, and that perfume is YSL Blue Clone. So अगर आप Blue Clone का आप रिव्यू देखोगे, you will see that that perfume was an underperformer in its segment, and YSL के perfumes मतलब बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, but that perfume was by default did not sell well, and later on people realized that that was a good perfume, but उसकी problem थी उसकी longevity, and so is the problem with this perfume as well. So longevity wise I think इसकी longevity बहुत dull है, and I've been wearing this for around a week, so I wore this fragrance for a week, and what are my conclusions? First is सिर्फ बॉटलिंग से काम नहीं होता दोस्तों. विलन बॉटलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, एंड बिकॉज ऑफ द बॉटलिंग दे सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट सेलिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स डज नॉट मीन दैट द परफ्यूम इज गुड. सेकेंडली, $12.99 के प्राइस में आई थिंक दैट दिस इज अ बिट ओवर प्राइस बिकॉज फॉर $12.99 यू आर जस्ट पेइंग फॉर द बॉटल. द जूस इज नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी. मेरे हिसाब से अगर परफ्यूम का बॉटलिंग भी अगर आप बेसिक करो, बट इफ़ यू हैव फ्रेश स्ट्रॉन्ग जूस इनसाइड इट, दैट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज परफ्यूम की लॉन्गेटिविटी, उसकी लास्टिंग, उसकी प्रोजेक्शन ही आपको कॉम्प्लीमेंट दिलवाती है. Let's talk about the longevity of the fragrance. Longevity of the fragrance is 4 to 5 hours at max on a good day. On a bad day 2 से 3 घंटे चलेगी fragrance, and you know then you can smell it close to the skin, but still बहुत ज़्यादा close हो जाती है, so there is no point. About the sillage of the fragrance starting में बहुत अच्छी थी because when I sprayed this for the very first time, like some of the people asked me what the smell was, but eventually this smell faded away and got lost. So उसमें भी वही एक दिक्कत है. मुझे लगता है कि विलन के जो जूसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, एंड ब्लेंड अच्छी थी बिकॉज एट द स्टार्ट इटसेल्फ मुझे अल्कोहलिक टोन नहीं आया, बहुत ज़्यादा इथाइल अल्कोहल का स्मेल नहीं आया. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एक अल्कोहलिक टोन से उन्होंने बचाया है, बट स्टिल जैसे कि विलन हाइड्रा में थी, आप स्प्रे करोगे आपको एक बहुत सारा हार्श नोट हिट करेगी. इसमें नहीं है वैसा, इसमें उतना हार्श नोट्स नहीं है, but the problem is still that this is an overpriced fragrance. This fragrance is marketed by Villian Lifestyle, and Villian Lifestyle is in works with I think Rocky Bhae. So Rocky Bhae, or you can say
सुपरस्टार यश, उनके ही ब्रांड है ये, एंड आई थिंक दैट ही ओन्स सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप इन दिस फ्रेग्रेंस, एंड दैट मे बी वन रीजन वाई दिस इज सेलिंग अ लॉट. सेकेंडली आई थिंक दैट जब हार्दिक पांड्या ने इसका ये किया था, इंडोर्समेंट किया था, तो दिस प्रोडक्ट गॉट अ लॉट ऑफ हाइप, एंड दैट इज द रीजन जिसके वजह से 1299 प्राइस है. बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू दोस्तों, आप मत खरीदें इस फ्रेग्रेंस को, बिकॉज यू कैन बाई बेटर फ्रेग्रेंसेज देन दिस फ्रेग्रेंस. देन यू कैन से दैट दिस इज अ गुड क्लोन एंड ऑल्टरनेटिव ऑफ YSL, बट लाइक YSL इट परफॉर्म्स miserably, and that is the reason I think that this will not be a hit. Maybe बहुत लोग खरीदेंगे इसके बॉटल के वजह से. It looks very fancy. I love the bottle. You know, it handling of the bottle, it looks very good, and you know, at times it might you know entice a lot of young people, and young people को boxing packaging में बहुत ज़्यादा interest है. So yes, obviously. And lastly, I think that that sums up the video. There's not much to talk about this fragrance. I had some high expectations from Villian this time, but नहीं है वैसा फ्रेग्रेंस. तो क्या बोलूँ मैं आपको दोस्तों, आपको रॉन्ग रिव्यू, पेड रिव्यूज़ देना होता तो देयर इज़ नो पॉइंट. बट आई थिंक दैट दिस फ्रेग्रेंस इज़ ओनली फॉर द बॉटल. सो अगर आप कलेक्टर है, आप बॉटल कलेक्ट करने के शौक में रख रहे हो, तो आप खरीद लो. बट आई थिंक दैट दिस फ्रेग्रेंस विल नेवर रन आउट. ये इस फ्रेग्रेंस को मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, बिकॉज दिस माइट बी द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द फ्रेग्रेंस, दैट इज़ द बॉटल. सो लास्टली, I think that if you want to invest 1299 in the fragrance, try to invest in fragrances which are much more, if you don't want something oud based, try to go with let's say nautica voyage. Nautica voyage जो fragrance है दोस्तों, this is very cheap. 2006 में स्टार्ट हुआ था ये फ्रेग्रेंस बनना, एंड एवर सिंस दिस हैज़ गेन्ड इट्स पॉपुलैरिटी. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं अमंग यंगस्टर्स, एंड वेरी गुड. इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फ्रेश सेंट. आई वुड लाइक यू गाइज टू ट्राई these both of these fragrances, and you will know the difference. So difference होता है, and bottling में सिर्फ ध्यान देने से नहीं होता. So that is one thing which is wrong in Villian. In the next video, we'll be talking about 5 Villian perfumes which you can buy, and I don't recommend any, but still 5 Villian perfumes. If you want to buy from Villian, which perfumes should you buy? Which perfumes can get you that compliment? And with this being said, signing off Navneet. I hope I've summed this review. If you have any doubts about this review, if you want to do notes, the notes बता दूँ आपको दोस्तों. The top notes are what I feel. The top notes is mostly they say there is cardamom. There is no amount of cardamom in this fragrance. The top notes is only and only grapefruit. So ample amount of grapefruit. And अगर बहुत लोगों को लगता है कि ग्रेप फ्रूट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो लेट मी जस्ट शो यू अ बॉटल ऑफ ग्रेप फ्रूट. सो ये है आपका ग्रेप फ्रूट का एक टिपिकल परफ्यूम एंड अतर, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 60-70 रुपीज़. सो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ग्रेप फ्रूट. एंड इन द बेस देयर इज़ सीडार वुड. सो सीडार वुड है बेस में, एंड थोड़ा बहुत आई थिंक दैट देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ जेरेनियम. सो जेरेनियम की वजह से थोड़ी फ्रेशनेस आती है इन द मिडल, बट स्टिल वेरी डल, वेरी ब्लैंड. बहुत ही ज़्यादा बेसिक परफ्यूम है, एंड हाइप, यू नो, बिकॉज Villian is selling, because रॉकी भाई का परफ्यूम है. So obviously I can't say anything bad about it, because I want to live a very happy and long life. Signing off Navneet. I hope all of you have a good day ahead.